Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Pisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kancana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Jaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Narayanam Namaskritya Ram Saiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very major conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Head, unto Nara, Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of fortune, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatu Tamashloke Bhaktir Bhavati Naishiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamritam Uttama Sloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasaya Namaha. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vacharam pangom nangayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome to the Bhagavatam class, reading from Canto number 1, chapter 3, entitled Krishna is the source of all incarnations. Today reading text number 2 of chapter 3. Yasya ambasi sayanasya
Yasyambhasi shayanasya yoga nidram vitanvatah nabhi radam bhujad asid Brahma Vishwa Srijampati. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki. A part of the Purusha lies down within the ocean, within the water of the universe. एक पुरुष अवतार हैं जो कि ब्रह्मांड के नीचे पानी में सो जाते हैं. From the navel lake of his body, उनके नाभि से एक झील की उत्पत्ति होती है. sprouts a lotus stem. नाभि में एक झील होता है. उस झील में एक कमल का फूल खिलता है उनके नाभि में. And from the lotus flower atop this stem, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म. the master of all engineers in the universe, becomes manifest. ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, जो ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं, ब्रह्मांड बनाएंगे. Purport. Special attention. The first Purusha is the Karanadakshay Vishnu. पहले पुरुष अवतार करुणदक्षाय विष्णु या महाविष्णु हैं. From his skin holes, innumerable universes have sprung up. उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, एक से एक अनंत ऐसे निकलते रहते हैं. In each and every universe, the Purusha enters as the Garbhodakshay Vishnu. और हर एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु पुरुष जो हैं, वो गर्भोदकशाही विष्णु करके प्रवेश कर जाते हैं. He is lying within the half of the universe which is full of water of his body. और वो आधे ब्रह्मांड में पानी भर देते हैं अपने ही शरीर से निकले और उसी में लेट जाते हैं. And from the navel of Garbhodakshay Vishnu has sprung the stem of the lotus flower. और उनके नाभि में से कमल प्रकट हो जाता है. The birthplace of Brahma. और उस पे ही ब्रह्मा का जन्म होता है. Who is the father of all living beings. और वही ब्रह्मा जी सभी जीवों के जनक हो जाते हैं. And the master of all the demigod engineers. और सारे देवता लोगों के भी पिता होते हैं, देवता लोग ही दुनिया बनाते हैं बाद में. Who are engaged in the perfect design and working of the universal order. और वही देवता लोग सब मिलके पूरे ब्रह्मा जी के साथ मिलके दुनिया का पूरा संचालन कर रहे हैं. Within the stem of the lotus, there are 14 divisions of planetary systems. कमल के डंडी में 14 लोकों का सिस्टम बना हुआ है. And the earthly planets, not earthly planets, जो लेवल के जो ग्रह सब हैं, ग्रहों का, they are situated in the middle. बीच में, डंडी के बीच में स्थित हैं. Upwards, there are other better planetary systems. ऊपर में जो ग्रह हैं वो हमसे अच्छे हैं. And the topmost system is called Brahmaloka. सबसे ऊपर वाला ब्रह्मलोक कहलाता है. Also known as और Satyaloka. सत्यलोक भी कहलाता है. Downwards from the earthly planetary धरती के system, नीचे जो है, there are 7 lower planetary systems 7 अलग-अलग ग्रहों का सिस्टम है. inhabited by the asuras इसमें असुर लोग रहते हैं. and similar other materialistic living beings. बड़े जटिल कुटिल भौतिकवादी लोग वहाँ रहा करते हैं. From Garbhodakshay Vishnu, there is an expansion of the Kshuradakshai Vishnu. और उस गर्भोदकशाही विष्णु जो लेटे हुए हैं, उनसे एक और विष्णु निकलते हैं. Who is the collective Paramatma of all living beings. जो सभी जीवों के अंदर जो परमात्मा रूप से चले जाते हैं वही. He is called Hari. उनको हरि कहलाते हैं. And from him, all incarnations within the universe are expanded. और उन्हीं से भगवान जितने भी अवतार लेते हैं इस दुनिया में, उन्हीं के माध्यम से आते हैं. Therefore, the conclusion is that the Purusha Avatara is manifested in 3 features. इसलिए जो पुरुष अवतार हैं उनमें से 3 तरह से दिखते हैं. First, the Karanadakshay
कारणोदक साई विष्णु who creates aggregate material ingredients in the Mahatattva. जो महातत्व बनाते हैं भौतिक प्रकृति का, जिससे कि दुनिया बनती है बाद में. Second, the Garbhodakshai who enters in each and every universe. दूसरे गर्भोदक साई विष्णु है जो कि हर ब्रह्मांड में घुस जाते हैं. And third, the Kshirodakshayi Vishnu who is the Paramatma of every material object. और तीसरे जो क्षीरोदक साई विष्णु जो कि सारे जीवों के अंदर परमात्मा बन के चले जाते हैं. Organic or inorganic. वो जो ऑर्गेनिक मतलब होता है जो जो जीव जगत में जितने हैं, जैसे पेड़ पौधा पक्षी जानवर, ये सब ऑर्गेनिक कहलाते हैं. इनऑर्गेनिक मतलब ठेला पत्थर, ये सब इनऑर्गेनिक. So, हाँ, जैविक और अजैविक. some words I forgot. One who knows these plenary features of the personality of Godhead knows Godhead properly. जो इन तीनों पुरुष अवतारों को जानता है वही भगवान को जानता है, नहीं तो नहीं जानता. And thus the knower becomes freed from the material conditions of birth, death, old age, and disease. और जानने वाला जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाता है, As it is confirmed in the Bhagavad Gita. जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है. In this shloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. इस श्लोक में महाविष्णु के बारे में संक्षिप्त में कहा गया है. The Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. महाविष्णु जो है आध्यात्मिक आकाश में अपने ही इच्छा से कहीं तो लेट जाते हैं. Thus he lies on the ocean of Karana. और उस तरह से वो कारण के समुद्र में उठते हैं, From where he glances over his material nature. जहाँ से वो अपने भौतिक प्रकृति की तरफ दृष्टिपात करते हैं. And the Mahatattva is at once created. और तुरंत ही महातत्व का सृजन हो जाता है. Thus electrified by the power of the Lord, इस तरह से भगवान की शक्ति से विद्युतीकरण होते हुए the material nature at once creates innumerable universes. भौतिक प्रकृति तुरंत ही अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर देती है. Just as in due course a tree decorates itself with innumerable grown fruits. जिस तरह से एक वृक्ष जो है समय आने पे पूरा फल से लग जाता है, उसी तरह भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों से लग जाती है. The seed of the tree is sown by the cultivator, बीज तो लगाने वाला लगा के जाता है किसान, and the tree or creeper in due course becomes manifested with so many fruits. और लता पेड़ पौधा समय आने पे पूरा फल से लग जाता है. Nothing could take place without a cause. बिना कारण के कुछ भी प्रभाव, कुछ भी इफेक्ट होने, कुछ भी हो ही नहीं सकता. The Karana ocean is therefore called the causal ocean. इसलिए कारण समुद्र को कारण समुद्र कहते हैं. Karana means causal. We should not foolishly accept the atheistic theory of creation. कारण का मतलब कारण है. हमको जो बिना कारण वाले लोग जो कहते हैं कि अपने आप ही सब हो गया, उनका मूर्ख जैसे सिद्धांतों को नहीं मानना चाहिए. The description of the atheists is given in the Bhagavad Gita. एक नास्तिक का परिभाषा भगवद गीता में दिया गया है. The atheist does not believe in the creator, वो मानता नहीं कि दुनिया को किसी ने बनाया है, but he cannot give a good theory to explain the creation. लेकिन वो सृष्टि के बारे में कोई ढंग का सिद्धांत दे नहीं सकता. मूर्ख. Material nature has no power to create without the power of the Purusha. भौतिक सृष्टि में कोई ताकत नहीं है बिना किसी पुरुष के इसको सृष्टि करने. Just as Prakriti or woman cannot produce a child without the connection of a Purusha, of man. ये तो ऐसे हो गया कि कहेगा कि स्त्री अपने आप बच्चा पैदा कर देती है बिना पुरुष का. हो ही नहीं सकता, पुरुष चाहिए. The Purusha impregnates and the Prakriti delivers. पुरुष जो है उसको गर्भवती करता है, तब वो बच्चा पैदा करता है. We cannot expect milk from the fleshy bags on the neck of a goat. बकरी के गले में भी कभी-कभी स्तन दिखता है, उसको धोने से कभी दूध नहीं निकलेगा. Although they look like
breastly nipples. कभी कभी वो दिखता है कि थन है, लेकिन कितनों दूध निकालने से निकलेगा. Similarly, we should not expect any creative power from the material ingredients. उसी तरह भौतिक चीजें अपने आप में कोई चीज सृष्टि नहीं कर सकती है, ये मूर्खता है सोचना. We must believe in the power of the Purusha, हमको पुरुष के ताकत पे भरोसा करना चाहिए, who impregnates Prakriti or nature. जो प्रकृति को गर्भवती करता है. Because the Lord wished to lie down in meditation, जब भगवान कारण समुद्र में सो जाते हैं ध्यान में, the material energy created innumerable universes at once. तुरंत ही भौतिक प्रकृति दनादन 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 भौतिक सृष्टि करना चालू करती है. In each of them, the Lord lay down, जब भगवान सो जाते हैं, and thus all the planets and the different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. तुरंत ही भगवान की इच्छा से सब प्रकट हो जाता है. The Lord has unlimited potencies, भगवान के अनंत शक्ति है, and thus he can act as he likes तो वो जैसा चाहिए वैसा हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं. by perfect planning. उनका प्लान परफेक्ट होता है. Although personally he has nothing to do. उनको कुछ लेना देना नहीं भौतिक सृष्टि से. No one is greater than or equal to him. वो उनके बराबर और उनसे बड़ा नहीं. He is the verdict of the Vedas. यही वेदों का कथन है. It's a very nice description, summarized description of a subject matter that has bewildered mankind and continues to bewilder mankind even up to today. पूरी दुनिया पागल है, भ्रमित है, बड़बड़ा रही है, बकवास कर रही है, लेकिन उसका उत्तर इस तात्पर्य में दिया है. The Prabhupada is referring to the asuras, those who are scientists and don't accept God. They have their own so-called theory of creation. जो असुर लोग हैं, जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भौतिक प्रकृति अपने आप से जन्म हो जाता है. But their theory means that it is constantly changing. उनका जो सिद्धांत है हमेशा बदलते रहता है. The story or the explanation that we are receiving from the Bhagavatam never changes. भागवत में जो लिखा कोई बदलता नहीं. This is something we should be thinking about. The special, unique feature or quality of Vedic knowledge is it is unchanging. वेद में जो लिखा है उसका सबसे बड़ा कहना है कि ये बदलता नहीं. जो लिख दिया सो लिख दिया, बोल दिया तो बोल दिया. It is much less taxing on the brain. और दिमाग में जगह कम लेता है क्योंकि बदलता कम है. That's why students in ordinary school who follow the atheistic explanation, their mind is always puzzled. इसलिए जो स्कूल बाहर के स्कूल में बच्चा लोग पढ़ता है, उन लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ कल आज बदल जाता है, कल बदल जाता है, बदलते रहता है. Whatever book they study during one semester, that book becomes obsolete. पहला जो एक क्लास में पढ़ाई करते हैं, अगला क्लास में वो सब बदल लग गया रहता है. They have to फिर नया carry. पढ़ता हूं. They have to carry. You know, the poor parents, mother and father, have to buy so many new books all the time. हमेशा नया नया किताब खरीद करते रहते हैं. It's a great business for people who publish books. किताब छापने वाला का धंधा चलता है. But in our Vedic culture, Shastra remains the same, so we don't need so many books. शास्त्र बदलता नहीं, वैदिक सिद्धांत में शास्त्र वही रह जाते हैं, बदलते नहीं बहुत सारे. One of the verses in the Bhagavatam is nicely explaining that since time immemorial, great saintly persons have been studying the same text of Bhagavatam. अनंत काल से सब ऋषि लोग, महात्मा लोग एक ही सब श्लोक सबको पढ़े जा रहे हैं. So this is a बदलाव नहीं. very great advantage of coming in contact with this Vedic knowledge. It is unchanging knowledge. Why it is unchanging? We should ask the question, why it is unchanging? तो बहुत बड़ा फायदा है जब वेदों के साथ आते हैं कि वेदों का ज्ञान जो बदलता नहीं है, ऐसा ज्ञान जो बदले नहीं, ऐसा मिल जाए, तो सवाल उठता है कि ऐसा ज्ञान कहाँ से, या ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है कि जो बदले नहीं, ऐसा ज्ञान कैसे हो भी सकता है. What is the answer? Why this knowledge is not changing? ये बदल क्यों नहीं रहा ज्ञान, कौन उत्तर दे सकता है? Because it is perfect knowledge. क्योंकि ये परफेक्ट है, ये जो ज्ञान है परफेक्ट, इसलिए कैसे बदलेगा? It is perfect because it is given by Krishna himself. कृष्ण ने दिया इसलिए परफेक्ट. And man-made knowledge, man-given knowledge, because it is imperfect, therefore it is constantly changing. ये आदमी का दिया हुआ ज्ञान कैसा रहता है, इम्परफेक्ट होता है, इसलिए बदलता है. So
this very nice explanation of Garbhodakshai Vishnu. गर्भोदक विष्णु के बारे में कहा जा रहा है. Here it is explaining that from Karanadakshay Vishnu expands Garbhodakshai Vishnu, who, yeah, कानोदक्षा विष्णु से गर्भोदक्षा विष्णु आते हैं. and who fills every universe. There's some small universe, some big universe. He fills half of the universe with the water coming from his body. कुछ ब्रह्मांड छोटे हैं, कुछ ब्रह्मांड बड़े हैं, सब में वो अपना आधा पानी भर देते हैं. Did you ever taste the sweat from your body? आपने अपना पसीना टेस्ट करके देखा है, स्वाद देखा, चखा है कि What is the taste? सॉल्टी, Yeah, salty. नमक नमकीन होता है. Huh? नमकीन, Namkeen. नमकीन, सॉल्ट. Okay. Namkeen. Close to Nimki. Anyway, Namkeen. So this is very logical that तर्क संगत. because his body is very big, therefore we can only bring out maybe a few drops from our body. We can't even fill one glass. हम लोग एक गिलास भी पसीना से भर नहीं पाएंगे, लेकिन महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु जो पसीना निकालते हैं, आधा ब्रह्मांड भर जाता है. He can fill a whole ocean. पूरा समुद्र का समुद्र भर जाता है. And that is why also the ocean is salty. इसलिए समुद्र भी खा रहा है, भगवान का पसीना से आया. The water from our body is salty. The water in the ocean is salty. तुम लोग सब नहाया था ना समुद्र में? कैसा? Yeah, Jagannath Puri. Who went swimming in Jagannath Puri? और Oh yeah, so some of them must have swallowed some water. It's salty. कौन कौन पानी पी गया था हाथ का? Yeah. So this is very logical, very practical, this explanation. It's also mentioned that between the spiritual sky, between Vaikuntha and the material world, there is this ocean that is called causal ocean. वैकुंठ जगत और भौतिक जगत के बीच में एक कारण समुद्र है. What's the Sanskrit name? कारण समुद्र. Two, three names. Yeah, right. Vaitarni is one name. Yeah. Another one doesn't come to mind. So they're between. It's not so easy to go back to the spiritual world. You have to cross a big ocean, causal ocean. बड़ा एक समुद्र जो है वो पार करना होगा. And that causal ocean. Today is what is today? एकादशी. No, but Tomorrow is Vaman Dvadarshi. tomorrow is Vamana Day, right? Yeah, okay. Fasting. Huh? Fasting is Fasting is today, yeah. So in this pastime of Lord Vamanadev, that is nicely described how Lord Vamana, who was the supreme Lord, appeared in a small body, dwarf-like body, Brahmana body, but he expanded and he pierced the universe with his toe. जब भगवान वामन देव त्रिविक्रम का रूप लिए तो अपने अंगूठे से ब्रह्मांड को फोड़ के वो समुद्र जो है उधर का वहां तक फोड़ दिया. And it is from that piercing of the universe with his toe that only a few drops of the causal ocean entered. कुछ दो तीन बूंदे जो तीन बूंदे वहां से गिर गई वही तो इधर आ गई. And that is, I think, from here, from Kutam, from village, at night time in the clear sky, we can see what is called the Milky Way. अगर रात में आकाश साफ है तो आकाश गंगा आपको दिखेगा वहां पे. आकाश गंगा Who has seen the Milky Way? कितने लोगों ने देखा है आकाश गंगा? They haven't seen the Milky Way. Huh? Even I haven't. Everyone can see the Milky Way. Huh? Really? Yeah, really. Today night we'll try. Well, we have to wait for a clear, the Milky Way. The Milky Way is wonderfully described actually in the Bhagavatam. The Milky Way is actually that water descending. It is
different chariots are carrying this water. This is the Ganga descending, Milky Way. We can see some water. Yeah, you can see the Milky Way, Prabhu. Hmm. Yeah, in the sky. It's like innumerable, I mean, I'm not, innumerable seems like stars are in a line, kind of line. बहुत सारे तारे अगर रात में साफ हैं तो देखेंगे आपको तारे एक लाइन में हैं, वो आकाश से गंगा कर रहे You've seen? Come on. हैं. Today night we'll try. Am I seeing things? ये भी मारे. No, I'm not. I'm surprised. First time I'm hearing this. You're kidding. Not मारे. No, I mean, I'll try now. in Canada, we can, in remote areas, we can see it very nice, very clearly. It's like, it's a real, it's a wonder just to see it. But Kannada is that side of earth. Maybe that side they can see. Well, I think everywhere we can see it. It's towards the Meru side. Kannada is towards Meru. Is it? I don't know. Appears like that. So in Canada, we're closer to Meru than here in India. Yes. We'll try in the night. Anyways, at some point, whenever we come across a very clear sky, completely clear sky, so it is more difficult, of course, in the rainy season. After the rainy season, in a clear sky at night, usually in village, in city you cannot see. In city, because too much light is there, you cannot see in the sky. But it's very obvious. It's completely obvious. Thousands and millions, billions, probably trillions of stars. They look like stars. It is the Ganga. From the piercing of Vamanadev, the water is still coming down. हजारों हजारों करोड़ों अरबों खरबों तारे आपको एक लाइन में दिखेंगे, लगेगा कि वही गंगा जी जिस रास्ते से उतर रही है उस रास्ते. And actually Mother Ganga, who was descending, she stopped in the moon planet. वो उतरते उतरते चंद्रमा में रुक गई. She did not want to come down to this earthly planet. चंद्रमा से धरती पे नहीं आना. But it was because of one great personality called Bhagirath, King भागीरथ Bhagirath. आए बहुत बड़े व्यक्ति. It's also nicely explained in the Bhagavatam. गंगा जी को नीचे. Who prayed and humbly requested Mother Ganga to descend from the moon planet to this planet. गंगा जी को उन्होंने निवेदन करके उन्होंने चंद्रलोक से धरती लोक तक उनको लेके आया. What were the there were two reasons why Mother Ganga did not want to come down. गंगा जी दो कारण से धरती पे नहीं आना चाहती थी. पहला, What are those two reasons? people are very sinful, they will dump their sins on Ganga. Yeah, yes. And the other one? And the force is too high. Yes, my force, I'm, You break the earth. I will go right through the planet, and I will go down to Patalaloka, hellish planet. गंगा जी कहती है मेरा तेज इतना रहेगा कि मैं धरती फाड़ के रसातल चली जाऊंगी. और दूसरा है कि सब पापी लोग आके पाप नहा नहा के पाप डाल डाल के भाग जाएंगे. Yes. But then he, then King Bhagirath, he found a solution. भागीरथ ने उपाय निकाला. He mentioned that actually, whenever saintly persons will take bath, they will neutralize. जब संत महात्मा लोग नहाएंगे तो सारा जो डाला हुआ पाप है सब खींच के निकाल देंगे. Yeah. And then he called upon Lord Shiva to hold the Ganga so that it doesn't pierce in the universe. और उन्होंने शिव जी को बोला कि आप थोड़ा गंगा जी को पकड़िए और नीचे बैठ जाइए. Yeah. So these are not stories. These are all very practical explanations of connected with the creation of this ये सब universe. कहानी नहीं है, सच में हुआ है. Yeah. And this is something that only those who know a little bit
here it's nicely explaining when we know about these three personalities, Purusha, then we can, only then we can become liberated from this material world. जब तक हम ये तीन पुरुष अवतारों को नहीं जानेंगे कि उनके द्वारा प्रकृति चल रही है, अपने आप नहीं चल रही है, मूर्ख नास्तिकों को जैसे नहीं सोचेंगे, तभी जाके हमारा जो है मुक्ति होगा, नहीं तो मुक्ति नहीं होगा. That means that those who don't attend Bhagavatam class cannot be liberated from the material जो world. भागवतम क्लास में नहीं आ रहे उनका मोक्ष नहीं होना. So any question on this? कोई प्रश्न, टीका, समीक्षा, टिप्पणी? Which are the oceans of Garbhodakshay Vishnu and Kshirodakshay Vishnu? What Which is are that? the name of the oceans? Different oceans they are lying. What's the question? The name of the ocean in which Garbhodakshay Vishnu is lying and Kshirodakshay Vishnu is lying. Garbhodakshay Vishnu is lying in the Garbha ocean. And Garbhodakshay Vishnu Garbha Sagar mein hai. yeah, and Karanakshay Vishnu is lying in the causal ocean. Karanakshay Vishnu Karan Samudra mein so rahe hain. Yeah, we just read in the purport. Kshirodakshay Kshirodakshay Vishnu, he is in the milk ocean. और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है श्वेत वो द्वीप. दूध के सागर में, क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप में. Shvetadvip, yeah. And Bhagavatam describes so many different types of oceans also. भागवतम में और भी बहुत तरह के सागर हैं. Yeah. Any other? कोई और प्रश्न? प्रश्न? हाँ, प्रश्न. Somebody has a hand up in the back there, but it's not for a बोलो question. प्रश्न. विष्णु भगवान कहाँ से है? Over there? From where विष्णु भगवान came? From where Vishnu Bhagavan came? From Krishna. कृष्ण से आए. कृष्ण से. And now, where did विष्णु Krishna भगवान come? कहाँ से आए? Krishna Bhagavan doesn't come from anywhere. He's always existed. वो हमेशा रहते हैं. वो किसी से आते नहीं. Yeah. He is the cause of all causes and eternal, eternally existing. वो हमेशा रहते हैं. सबके कारण के कारण है. फाइनल कारण वो हमेशा रहते हैं. Yeah. उनका कभी नाश नहीं होता. It's a natural question to ask, who's your father? Who's his father? Who's his father? ये अच्छा सवाल है और सवाल हमेशा रहेगा. When Prabhupada explains, when we come to that person who doesn't have a father, he's God. जब कोई पूछता है तुम्हारा बाप कौन है, उसका बाप वो, उसका बाप वो, तो फिर ऐसा खोजते खोजते जब फाइनल में एक आदमी मिलेगा जिसका कोई बाप नहीं, वही भगवान है. जब तक बाप मिलते जाएगा तब तक वो भगवान नहीं. जब बोलेगा अच्छा इसका कोई बाप नहीं, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने आप में मतलब क्या है? भगवान, वही भगवान. There are not many people who don't have a father. बहुत सारे लोग थोड़ी हैं ऐसे जिसका बाप नहीं है. Have you met anyone? कितने लोग जिसका बाप नहीं? बिना बाप का आदमी है? एक ही है. कौन है? हाँ. Everyone has a father and mother, except Krishna. भगवान कृष्ण का ही कोई माँ बाप. But he also has, he performs Leela where he has mother and लेकिन father. भगवान लीला करने के लिए माँ और बाप स्वीकार कर लेते हैं. माँ बाप वास्तविक तो नहीं हो सकता है, लेकिन लीला करने के लिए एक माँ बाप स्वीकार कर लेते हैं. Okay. जो ocean, churning of ocean, which ocean it was? Churning of ocean. The churning of the ocean. Where it happened? I forget now. Was it the Milk Ocean, eh? Shvetadvip.
maybe Swatik or maybe this milk ocean which is there on Bhumandala. But it was milk ocean. It is mentioned. Ocean of milk. Ocean of milk. Milk ocean. Okay. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। Very good.